कि वो रूह उनका क्या होगा, जो औरतें यहाँ पे उनकी रूह के साथ क्या होगा? तो वो भी तो ऊपर जाएंगे ना, those souls will also go, जन्नत दोज़ख में जाएंगे, they will also go to heaven and hell according to their deeds. लेकिन जब आदमी को वो मिलेगी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देगा ना, तो फिर उनके लिए ज़्यादा जन्नत है. And once you get the females which God created for you there in the sky, then you won't be devotee towards your wife and your female here. So for them God has created another heaven, women's heaven. They may go there. So there's a one heaven for men and another heaven for women. पूछे और मर्दों की जन्नत है, मर्दों की 7 जन्नतें हैं. The 7 heavens for men. औरतों की 1 जन्नत है. For women there is only 1 heaven. जिसमें सिर्फ औरतें होंगी. Only for women. 1 heaven. Where only women can live. The teaching of the Torah and the Injil, again, I wish I could refer more to the teaching of the Quran, but in case I get it wrong I won't. So I'll stay with the Torah and the Injil. Right. It mentions that there are 3 aspects that form man. One is the physical body that we live in at the moment. The other is the soul, which is our being within that body. And the third one is the Spirit of God, which unites the soul and the body to make one whole. Now, is that the same teaching? कह रहा फिकर तौरात और इंजील में एक तालीम दी गई है कि 3 एस्पेक्ट्स हैं इंसान के, 3 हिस्से हैं जिस्म के. एक मादी जिस्म, एक रूह जो ऊपर से सुनाई, तीसरा अल्लाह की रूह जो इन दोनों को मिला के रखती है. कह रहा है कि यही तालीम है आपकी? यही तालीम बयान करी है. Yeah, the same thing. And what happens to each one of these aspects when a person dies? पूछा जब इंसान की मौत आती है तो इन 3 हिस्सों को क्या होता है? एक हिस्सा ऊपर चला जाता है, बाकी एक हिस्सा कब्र में चला जाता है, एक रूह ऊपर चला जाता है, बाकी जो चीजें हैं उसके साथ वो कब्र में रह जाता है, कुछ अर्से बाद खत्म हो जाता है. One aspect your body, material body, stay in your grave and it destroy here. The other souls they go. One aspect is on the first side. बाकी सोल जो है वो कब्र में है. And the other souls, within the body, they are in your grave. अगर उनमें ताकत है, नूर की ताकत है, तो फिर वो कब्र से लोगों को फैस पहुंचाता है. If they have a power of light of God, the soul in the grave, then they help people and give them blessings. अगर वो जादूगर है, शैतान की ताकत वाला है, तो उसको बदलू बोलता है और लोगों को सताता है. And if your soul has a negative power, then it harms people, and that's called bad evil and bad souls. फिर लोगों को सताता है, वो शैतान को मिल जाता है. Trouble the people in the. ये 3 होते हैं. That these are 3 aspects. Now, again, the Torah states in, I think, 4 or 5 different places, the Injil in about 2 different places, that the dead know nothing. The dead know nothing. That the spirit of God returns to God, but the soul ceases. Soul ceases at that point. And the only time that the soul has knowledge again is when God raises that soul to have a new body, as you mentioned, a body that is completely different from the bodies we have at the moment. How does that correspond with these teachings? तौरा ज़रूरत है कि जब इंसान की मौत आती है तो जो अल्लाह की रूह है, स्पिरिट ऑफ गॉड, वो ऊपर चली जाती है, और जो दूसरी रूह है वो वहीं पे सीज खत्म हो जाती है. यही कहा है, अगर ताकत खत्म हो जाती है. He said the same thing. If you do not have a power in your soul, तो वो फिनिश, whether negative or positive power, then it finishes at that finish. अगर पावर है नेगेटिव पॉजिटिव तो फिर खत्म हो जाती है. And if you have a positive power, still there alive, helping the people. If you have a negative power, still it is alive and disturbing the people. Now, what is the ultimate end of mankind? क्या इंसान का आखिरी हद क्या है, वो इख्तिताम क्या है? दीदार खुदा. It's see God physically. Now, does this mean that this world as we know it will continue forever, or what will happen to the world as we know it today? ये दुनिया है, क्या ये मुस्तकिल चलती रहेगी या ये खत्म होगी? दुनिया खत्म होगी. It will finish. This world will be destroyed. ये एक इम्तिहान है, बस इम्तिहान खत्म हो जाएगा. This is just for an examination purpose. The exam will finish. It will finish. जब सब दुनिया में आ जाएंगे ना, फिर वापस चले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा. Once all the souls will come in this world for exam,
then the game is over. Then this will destroy and then all the souls will go back. तो ये वजह जल्दी बच्चे हो रहे हैं 5-10 12 घर में. That's why so many kids are being born very fast nowadays, so that all the souls should come for exam. Yes, an estimation has been made that there are as many people living today as have lived in all of the history that has gone before. केरल सरकार की यही वजह है कि जितने आजकल इंसान इस दुनिया में रह रहे हैं, रिकॉर्ड है कि पिछले पूरे दौर के में इतने आदमी कभी नहीं रहे. जो रूह को नीचे ला रहे हैं जल्दी ताकि दुनिया को खत्म करें. That's why God is taking all the souls down on the earth as fast as possible so that the world can be finished. साइंस भी रूहानियत भी सब कहते हैं वो थोड़ी अरसे में दुनिया खत्म हो जाए. That's why the scientists, even spiritualism and everybody's saying that the end of world arrived. Now this again was the next question. How do we then see the future of the world? Is there I'm not asking if there is a defined time limit, because one would have to be God to say when the world is finished. Yeah. But is it something that we can see that the world will end very soon? Or is there maybe another 1,000 years? Or कह रहा है दुनिया का मुस्तकबिल ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है या कि हजारों साल तक अभी रहने की चांसेस है? वो सैकड़ों की बात नहीं है. तो He's saying that even not, you can't say 100 years. then how can, is there any way that we can know this? Are there, for example, what I want to ask really is, how do we then relate to the prophecies which are found in the holy books? What do you mean by that? Where prophecies were made that there would be certain things that would happen. And then after these things had happened, then the end of the world would come. So, what is our position in that time scale? We have the end of the world here and the beginning here. What position are we at the moment? तो पहले पूछा है कि अगर इतना कम टाइम रह गया है तो जो मुख्तलिफ नबियों ने जो प्रेडिक्शंस की थी कि ख़त्म होने से पहले ये निशानियाँ पूरी होंगी, तो कह रहा उसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे? जैसे अगर कुछ अरसे में चंद सालों में दुनिया ख़त्म होती है तो फिर वो निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं नहीं हुई क्या? जो नबियों ने निशानियाँ बताई थी ना वहाँ से कई साल पहले पूरी हो चुकी हैं. All those indications which different prophets have given in their books, the different things from things have already fulfilled many years before. All of the prophecies? Yeah, all of them. So we're saying that the prophecies contained in the Torah, the Injil, they're all finished. ये बताएं कि बाप बेटी के साथ लग जाएगा, बहन भाई के साथ लग जाएंगे, दिन से निकलेंगे, उसका पालन they have given this different prophecies. You will come to know that at the end of the world there will be no comparison of daughter and father and brother. They will be involving each other, and there will be no relating concept. Everybody will be doing it their own. The time has come now. बहुत से घरातों से लोग मजबूर से निकल जाएंगे और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, बगैर शादी के उनके बच्चे होंगे. Nobody, people will not want in religion, we will be living together without marriage, people just like that. अमेरिका में बेशुमार बगैर शादी के बच्चे हो रहे हैं. He said I have seen many people living together without any social status and they're just living like animals. ये तो पहले से हो चुका है. It's already done. So does that, what, there have been prophecies made, and every one of the major religions has a prophecy regarding the return of, whether it be Jesus Christ, whether it be Buddha, whether it be Imam Mahdi, whether it be Krishna. There is always a prophecy of a God returning to this earth. Again, what is the situation concerning that? different prophets ने उन्होंने जो सेम में लिखा है उसमें कहीं पे लिखा है कि जो बुद्धा है उन्होंने वापस आना है, और ईसा ने वापस आना है, हिंदू कहते हैं कृष्ण ने वापस आना है. तो उसके बारे में आप क्या मुस्लिम कहते हैं लेकिन वापस आना है, सही कहते हैं. It's all truth. Now, are we now waiting for the return? वो कह रहे हैं कि अभी उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आ चुके हैं. इस कंफ्यूजन आ चुके हैं. Everybody has arrived. Now, when you say everybody, can साल के अंदर तो हमको सारा पता चलेगा वो मर्द था वो इसे तो. Within 1 year, it will be evidently you will come to know that who was Jesus, who was Mahdi, and who was Buddha, and who was Krishna. वो बिल्कुल इसी तो दुनिया में काम कर रहे हैं, अपने फील्ड तैयार कर रहे हैं. They are already working in that field and preparing the people towards God. And within 1 year will come to know. जो उनके करीबी लोग हैं उनको जानते हैं. And the people who are closer to them, they know them. So each of these people are different people. कह रहे ये चारों अलग अलग है.
बुद्धा एक ही नाम है, अच्छा, ईसा अलावा है, बाकी वो बुद्धा और मोदी वगैरह एक ही है।